So, namaskar all of you. Odisha Civil Service 2025 mains test series ro test number 3 ro discussion ta aji start kariba. Test 1 और 2 रो discussion हमें complete कर सकछो. Test number 3 excuse me. Test number 3 रो discussion ta हमें जो करिबा दीटा parts से करिबा सेटा. That is first पांचटा question जोड़ा कि open रहिबो YouTube रे. आउ तापरे rest आपण आपणकर ऐप रे पाई जाय पारे. सो ए टेस्ट सीरीज विषय रे 55 टा टेस्ट हमर रहउची. ऑप्शनल छडा बाकी 7टा पेपर कवर करूची. चारटा जीएस पेपर, एसे, कंपलसरी इंग्लिश, कंपलसरी ओडिया. ओके 55 टेस्ट सब जाक 3 आवर्स टेस्ट रहउची. डिटेल्ड एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड लिमिट स्पेसिफिक मॉडल आंसर्स रहउची. इवैल्यूएशन डिटेल्ड क्वेश्चन वाइज इवैल्यूएशन आपनकर 4 डेज भीतर सबमिशन रो आपन को दिया होछ. ओके आउ वैल्यू एडिशन करी के भी आगुरु भी वीडियो करछि वैल्यू एडिशन रो. तो डाटा स्टैटिस्टिक्स एग्जांपल्स से गुडा भी आपनकर रहउछि एत. ओके सो लेट अस स्टार्ट देन. हमरो पेपर 1 ही चल छिए बे. जदि आपन देखिबे पेपर 1 रो सिलेबस एटा हिस्ट्री modern Indian history from about middle of 18th century till the present, significant events, personalities, issues, freedom struggle, its various stages and important contributors from different parts of the country, post-independence consolidation with reorganization within the country, Kalinga War and its significance, dynastic history of Odisha, Mahameghavana Kharavela, the Bhaumakarajan Somovanshi and Gangadhan Gajapati. तो चारिटारु पांचटा क्वेश्चन आपण आगुरु एक्सपेक्ट करि परिबे एई पार्ट सिलेबस रो. ओके सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इंडियन नेशनल मूवमेंट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री रो अछि. द रिवोल्ट ऑफ 1857 was the culmination of many local uprisings rather than an isolated event. हला क्वेश्चन रो रिक्वायरमेंट ता बुझातु. culmination of many local uprisings की 1857 आगुरु हमर अपराइजिंग सेतरा ता ऊपर किछि किछि अपन लिखिया पे पड़िबो. जेमति कि पाइको विद्रोह हितला, तापर वेल्लोर म्यूटिनी हितला, संथाल एंड अदर ट्राइबल मूवमेंट्स हितला. ओके बिफोर 1857 तो ता ऊपर किछि किछि अपन को लिखिया अछि. सेटा फर्स्ट पार्ट वाला. तापर एनालाइज द स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स. तो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स सब कोन थिला 1857 रो सेटा भी अपन को देखिबार अछि. ओके सो लेट अस स्टार्ट. 2 लाइन रो क्रिस्प इंट्रोडक्शन देबे. ओके ए जो इंट्रोडक्शन करी कर दम तो रिवोल्ट ऑफ 1857 अपन यदि इंट्रोडक्शन ता मने भी रखि देबे. जदी बहुत पिलंगर कोन थाए ना हमें सेंटेंस ता माइंड रे फॉर्म करि पर. सेंटेंस ता माइंड रे जेतु फॉर्म कर परनु हमें मेनली सिंपल सेंटेंसेस लिखुछु जो तरह के मे बी मार्क्स यू नो टिके गोड दिमार कम आस परछि. तो गोटे स्ट्राइकिंग सेंटेंस के सिंपल लैंग्वेज रे लिखिया कथा. सिंपल लैंग्वेज रे लिखले मार्क मिलियो. किंतु इंट्रोडक्शन टा ए कैची रहबा दरकार. पर एमति नो कि बहुत हमें ताको अलंकार माने ऑर्नामेंटल लैंग्वेज रे लिखिबा, हाई वोकैबुलरी यूज करिबा. किंतु गोटे भलो इंट्रोडक्शन सिंपल वर्ड्स रे भी ओके सेटा बहुत दरकार. तेणु जो मन को सेथरे प्रॉब्लम हुए केमति लिखिबी इंट्रोडक्शन, केमति लिखिबी कंक्लूजन. तो टेस्ट सीरीज रो ए जो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन दोची ताकू भी अपन मने भी रख दे परियो. केना प्राय सब क्वेश्चन पे सेटा ओके एक्सेप्शन किछटा एक्सेप्शन छाड़ देले प्राय सब क्वेश्चन पे सेटा वैलिड रहिबो. ओके सो लेट अस सी देन. Revolt of 1857 did not erupt in a vacuum. It due from years of scattered but intense local resistances across India. एटा पूरा स्पेसिफिकली क्वेश्चन जा पचारछि से हिसाब रे इंट्रोडक्शन टा कराइछि. These uprisings create grievances, leaders and networks that converge in 1857, turning a barrack mutiny into wide though uneven rebellion. Okay, so pre 1857 events कोन तो पाइकर रेबेलियन सेटा अपन लिख परिबे. वेल्लोर म्यूटिनी टा लिखि परिबे. संथाल अपराइजिंग टा लिख परिबे. जेतु हमरो टाइम कम कहिना एटा हला अपन 15 मार्क रो क्वेश्चन. ओके
10 रु 11 मिनिट आपको मिल ठीक अच्छे आउ 20 मार्क क्वेश्चन गुड़ा पाखापाखि 14 मिनिट आप धरिकी चल तेणु मत 11 मिनिट सब गुड़ा कंप्लीट करार अच्छे अल्दो मत जना थी बहुत किसी मुझे लिमिटेड लिखी ओके तो मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स कौन मिलिट्री फैक्टर्स जो ओके र्यूमर थिला ग्रीज्ड जो कैट्रिजेस रो एनफील्ड कैट्रिजेस रो तो जो थे कि पिग आउ काओ जो तांकर मीट रे ओके सेडा तार गोटे प्रोटेक्टिव लेयर करा होतला ओके दैट वाज द र्यूमर राइट सो सेडा गोटे मिलिट्री ट्रिगर तापर पॉलिटिकल एनेक्सेशन तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आ सेथरे जो माने सब अफेक्टेड हेले जो नोबल्स माने थिले तांको लोक माने थिले तांकर किछि काम भाव रहलन से माने दे वर नॉट वेरी हैप्पी तेणु ए जो हेडिंग्स गुड़ा एगुड़ा आपण सेम लिखिए मिलिट्री ट्रिगर पॉलिटिकल एनेक्सेशन एग्रियन फिस्कल स्ट्रेन कल्चरल रिलीजियस एंजाइटीज तापर ता एक्सप्लेनेशन जो वन लाइन ता आपण लिखि पारंती सेटा जेमती जदि समय नहीं लाइन न लिखि फ्रेज लिखले भी चलिबो हैला सो एग्रेरियन फिस्कल स्ट्रेन तो जो तंकर पॉलिसीज थिला ब्रिटिश कर एग्रीकल्चरल पॉलिसीज तापर रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसीज तापई हैरान होतले लोक ओके तो से माने भी रिवोल्ट को सपोर्ट करले कल्चरल रिलीजियस एंजाइटीज जो बहुत जगह रे क्रिश्चियन मिशनरीज आउ इंडिजिनस लोकों को भितरे इश्यूज थिला ओके तो सेठी भी एमान को लागिला इंडियंस मानक के एमान जो सब एक्सपेंशंस वो करचंदी किबा जा डेवलपमेंट करचंदी मे बी कन्वर्ट करिया पे वो करचंदी ओके सो ऑल दिस थिंग्स यू कैन राइट तापर कल्मिनेशन पार्ट रहिला तो देखो क्वेश्चन टा मल्टीफेसेटेड अछि आपन को सब ऊपर दि तीन लाइन लिखिया पड़ियो सो दैट 11 मिनिट भीतर आपन सारी पारिबे okay how 1857 culminated these currents okay तो किछि एग्जांपल्स आपने दे परिबे okay like मेरठ रे दिल्ली sepoys aligned with dispossessed elites like the Awadh talukdars the peasant bands that is in Doab and the regional leaders like in Jhansi Kanpur and Bihar showing a mosaic of local motives under a common anti-company banner okay so dispossessed elites, regional leaders, okay, and peasant bands. So, समस्त मिसिकी okay, although तांकर एजेंडा सेमती किछि गोटे कॉमन एजेंडा बेसी नथिला तांकर कॉमन एनिमी थिला तेणु से कॉमन एनिमी अगेंस्ट एक्ट करथिले राइट एटा छाड़ी देले चलिबो एटा गोटे अब्रॉड कंपैरिजन हमरो दरकार नाही एटा ओके टू लाइंस conclusion therefore 1857 is best read as federation of local resistance ei phrase ta likhi paribe apun emti kichita phrases जोटा आपण डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके यूज कर परिबे और भलो मार्क्स ले परिबे मिलिट्री एग्रेरियन पॉलिटिकल कल्चरल synchronized by immediate sparks its legacy lies in revealing how dispersed grievances one's network can scale into a subcontinental challenge to colonial rule और मोस्ट इंपोर्टेंट 250 वर्ड्स भितर आपन बेटा सरीवर अछि तो मन रखिया पे गोटे माइंड मैप यू कैन गो थ्रू दैट ओके टेस्ट सीरीज रो बेस्ट वे हला हमरो 55 टा टेस्ट अछि ओके ऑलरेडी 27 पर्यंत मु अपलोड कर सरलेनी आपनकर क्वेश्चन सुरा 15 पर्यंत मॉडल आंसर्स भी अपलोड हिस अछि ओके सो निज पेस रे बिकॉज 55 टा टेस्ट इवन अपन सब लिखि न पारले एटलीस्ट गो थ्रू ईच क्वेश्चन ताहले आउ सिलेबस टा 2-3 थर रिवाइज हिजबो प्राय एमती हमें कहि परिबा कि आउ किछि नथिबो जो थ्रू पढिबो क्वेश्चन ओके सो दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट ऑप्शनल रे भी सेमती 16 टा टेस्ट तेनु प्रॉपरली अपन जदी ईच एंड एवरी सेक्शनल टेस्ट टा प्रॉपरली दउछंती आउ ता परे फुल सिलेबस टेस्ट रो दउछंती आई डोंट थिंक that ho adhiga kichi darkar padibo question 2 question discuss the role of women in Indian freedom struggle after 1900 highlight the contributions of at least 3 major women leaders and assess their impact role of
in women in Indian freedom struggle after 1900. Okay, so time period is there. Highlight the contributions of at least three major women. So 1900 ପରେ ଆପଣ ମାନେ କଣ women କୋ field ରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ. Okay, organizing, mobilizing masses and defying colonial rules. Okay, constitutionalism, satyagraha, underground action, armed struggle रे भी ସେମାନେ ଥିଲେ, leaving a permanent mark on politics and society. Okay, so main broad role कौन तांकर थिला mass mobilization रे. Okay, main role women kara picketing, khadi, salt satyagraha, relief and welfare networks that sustain the movements. Okay, then leadership in organizations and campaigns, visible defiance that inspired fresh participation across regions. So se tinta koichi iti charta diaichi Annie Besant kara, Sarojini Naidu kara, Aruna Asaf Ali kara, au Captain Lakshmi Sehgal kara, different domains of diaichi. Captain Lakshmi Sehgal quite important because military perspective. तापर से देखिए तांकर impact कौन थिला, तो impact assessment, political impact कौन थिला, तो जो major parties से तो बोल तो कांग्रेस ही थिला, तो कांग्रेस रो top leadership पे भी women मानों को सेटा establish करा. It normalized women at the helm of Congress and mass action widening the social base of nationalism. तापर social implication कौन रहिला? It challenged the patriarchal norms. खाली पुओ पिला माने men माने ही lead करिवे सेटा को से challenge कला. Okay, and strategic impact कौन रहिला? It sustained momentum when top leaders were jailed. Okay, preventing movement collapse. तो सिंपली अलगा देशरे भी हेची, but सेगुड़ा we cannot waste time and words, but निजा knowledge पाई especially जे PSIR पिला अछती, you can political science and international relation रा किछिटा पार्ट से आपण अवरपेटा करते. Okay, so तारा conclusion रो भी first part ता बहुत important. Women after 1900 were not auxiliaries. Auxiliaries माने just आपण कहि परिबे गोटे just as a help. Okay, or as a help to the main or the lead, right? They were architects, political organizers, mass leaders, and symbols of courage. It will be 250 words limit. Got it? Question 3 ki asandu. Examine the significance of post-independence reorganization of Indian states. Significance like okay, and its impact on regional identities and governance. Impact. Significance, impact. This is focus kara, right? It was a turning point that redrew India's internal map on mainly linguistic lines, replacing colonial era provinces. Simple language रही थी, किंतु जहाँ कर एमती अच्छी कि मतलब हठात कि नहीं स्ट्राइक करनी, कितने जन अच्छी कि मैं बहुत जन अच्छी जो मैंने निजे सेटा लिखी दे पर इंट्रोडक्शन टा, बट जहाँ को प्रैक्टिस पर भी असुविधा होती, then you can remember it or you can memorize it. General introduction सुरा जोड़ा कि प्राय सब क्वेश्चन सुरा सही टॉपिक ऊपर है अपना लिखी परिवे. Introduction, conclusion. Okay, strong introduction और conclusion है body टा more or less सब पिलांग कर पाखा पाखी ही था. Okay, introduction और conclusion टा अपना strong रखने वाला अच्छी, right? So first line टा ठीक है mind में रखिए. Okay. So rational and design, the Fazal Ali Commission, Tara recommendation confila. Okay. So Andhra Pradesh 1953 okay, it was granted statehood based on language. This is after independence we are talking. Before independence, Odisha already on basis of language amago statehood mili sarthila. Regional identities recognition, तेणु सेठिकार local language. Okay, सेटा आउरी सेठी spread हैला बढ़िला तारो पूरा इकोसिस्टम तैयारी गला तारो प्रेस तारो टीवी चैनल्स मीडिया एक्सेट्रा तो recognition. Next हैला integration. Okay, so national integration could be सेटा help वाला केमती ना different languages. Okay, but still then existing in a single political setup. ठीक है. Although केबे केबे हमें किसी friction देखुचु कि को स्टेट रे कहउचंती कि भाई तुमे जदी एठी रहइबो तले आम लैंग्वेज को
Okay, we are quite fortunate. Eti Odisha re se sabu problems nahi. Okay, किछि examples आपण देई परियो सेतरे formation of Kerala, Karnataka, Maharashtra. Abroad example हमारा दरकार नहीं. तापर से impact होइतिला. तो impact on governance, administrative efficiency. Okay, so जेहेतु प्राय लोक तो इंग्लिश जान नथिले और हिंदी भी जान नथिले. ओके ओडिशा कथा हूँ तो लोक ओडिया ही पूरा जानथिले. जेतरो ओडिया रे ऑफिस काम होउची तो बहुत लोग बुझी पारुछन जिनसटा. पार्टिसिपेटिव सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट रो गोटे एटा इंपोर्टेंट एग्जांपल. ओके से माने नॉले पार्टिसिपेट करि परिबे तो बुझी परिबे. सो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़िबो. सिंगल लैंग्वेज ब्यूरोक्रेसी इंप्रूव सर्विस डिलीवरी, courts and schooling access in state language. Okay. Then federal balance, while linguistic states multiplied veto points, planning and finance mechanism kept strong union coordination in the early decades. Okay, so main power ta jabi hele center pakhre setoli thila ebe bi अछि. Okay. Otherwise कोन हबो ना से को जगह रे depending on political ideologies and all regionalism बहुत बढ़ी जो कि हमको ये लैंग्वेज टा दरकार ही नहीं. फॉर एग्जांपल सी इन तमिलनाडु. ओके रिलेटेड टू हिंदी. ठीक है. सो नॉट ओनली तमिलनाडु टा बहुत एक्सट्रीम रे आउ अदर प्लेसेस ऑफ साउथ आल्सो सेम थिंग. ओके तापर लिमिटेशंस एंड ऑनगोइंग इश्यूज, बाउंड्री एंड माइनॉरिटी फ्रिक्शंस परसिस्टेड. ओके माने एटा हैला परे भी इश्यूज रहला. इंटरस्टेट लैंग्वेज बॉर्डर्स, सब रीजनल क्लेम्स requiring later adjustments. Okay, so 2 lines of conclusion ta par kar debe. Okay, the 1956 reorganization converted linguistic diversity from a threat into a principle of representation, deepening democracy and legitimacy. Okay. Question 4%. Evaluate the contribution of social religious reform movements, particularly se dechi Brahma Samaj and Arya Samaj. Agu bhi padichi question ta. In shaping modern Indian society in 19th and early 20th century. So these acted as catalysts for change, challenging orthodox customs and promoting modern values. Okay. So contributions for abolition of social evils, child marriage, sati, olga bhi बहुत गुड़े widow को remarriage करे अपने दोनों पे, all these things were there. So abolition of social evils. Then education and women's empowerment. So they focused on okay breaking the barrier जोटा कि ଗୋଟେ patriarchal society रे थिला कि women माने पढ़ी परिबेन. ठीक है. Although if you see ancient history आपण पढ़िथिबे ऋग्वेद period रे भी आपणकर बहुत learned women माने थिले. Okay, Ghosha, Lopamudra, you know, all these people were there. You know, पूरा सेटा ठीक नुह किंतु मोर और लेस बहुत जगह हमें पाइलु कि वुमेन मानन को आगु जीवा पे दिया होना. ओके तापर कास्ट रिफॉर्म एंड इक्वालिटी. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस कि एवरीवन इज इक्वल इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट. आ सेथरे भी बहुत गुडे जो लोकल कल्चर्स अछि से गुडा हेल्प कले. जेमति कि आपण लॉर्ड जगन्नाथ कल्चर नहीं पारिबे. ओके आनंद बाजार रे एक संगे समस्त मिसी कहउछन इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट. ठीक सेमती द कलर्स ऑफ द डिटीज ओके यूनिवर्सल ब्रदरहुड को देखौछि बिकॉज़ ही इज रिप्रेजेंटिंग एंटायर यूनिवर्स. ऑल्दो से ओडिसा रे अछंती. ओके लॉर्ड जगन्नाथ इज ब्लैक, दैट कलर रिप्रेजेंट्स अफ्रीकन्स. ओके नेग्रिटोस जो माने जदी आपने रेस कथा कहबा. तापरे लॉर्ड बलभद्र इज व्हाइट. ओके कॉकोसॉइड्स ओके प्रोटोस्ट्रोलॉइड्स से माने सब सेथरे गले कॉकोसॉइड्स माने. तापरे देवी सुभद्रा इज येलो, से मंगोलॉइड्स को रिप्रेजेंट करछंदी. ओके येलो स्किन्ड पीपल. ओके आउ तापरे लॉर्ड सुदर्शन ही इज पिंक, ही बेसिकली रिप्रेजेंट्स द रेड इंडियंस, इंडिजिनस पीपल, राइट. सो ही रिप्रेजेंट्स द एंटायर यूनिवर्स. तो तार एग्जांपल दे परिबे. एग्जांपल छुडा हमर ओडिसा रो देले बोलो इंडिया रे दे परिबे. ओके देन रिलीजियस रैशनलिज्म. तो रैशनल थिंकिंग, ब्लाइंड बिलीफ हवा कथा नु. फेथ इज फाइन बट ब्लाइंड फेथ हवा कथा नु. ओके आउ सेठरे भी हमें ओडिसा रो एग्जांपल दे परिबा. फॉर एग्जांपल जो हमर पंचसखा माने थिले. ओके तो सेठी ज्ञान रो बहुत इंपोर्टेंस थिला.
In Utkaliya Vaishnavism, jnana plays a very important role. Okay, that is bhakti is there, bhakti and jnana also has to be there. But in Gaudiya Vaishnavism, जोटा कि चैतन्य महाप्रभु जोटा आनिथिले गौड़रू माने बेंगल रू parts of Bengal, तो सेटा थिला complete devotion. You don't have to ask questions. You have to completely submit yourself to the God. ठीक है. But एठी कौन थिला? तर्क थिला. Okay, rationalism थिला. Right. So तापर आसिला national awakening like Raja Ram Mohan Rai, Swami Dayananda Saraswati. Okay. So Brahma Samaj and Arya Samaj से देची. So you just can write 1-2 lines about them. So these were not mere religious revivals, but social revolutions that redefined India's moral and cultural fabric. Okay. Then now let us go to the last part, last question of the first part. That is, describe the major features of British economic policy. British economic policy no major features in the late 19th and early 20th centuries, and the ways in which Indian nationalists responded to it. Okay, British economic policy in India. Right. So important introduction to the British economic policy in late 19th and early 20th century India aimed to integrate the Indian economy into Britain's global capitalist system. Okay. So if phrase directly recognize. Core features of British economic policy: deindustrialization. India जेमती industry जोड़ा बढ़िबनी और जोड़ा थिला सेगुड़ा भी जेमती भांगी जिवो. ताको ऊपर अधिक टैरिफ्स पकेबे. ओके, टैक्स हरिका पकेबे. whereas तांको देशर जो माने इंडस्ट्रियलिस्ट अछंती तांको सब्सिडी देबे कि तुमे आसी इंडिया रे तुम जिंस विको. ओके, तो सेटा सस्ता हो ऑब्वियसली तो लोक सेटा ही किनिबे. स्वदेशी मूवमेंट आसिला पर्यंत दिस वाज द केस. देन ट्रेड एंड टैरिफ्स. सो amara jo, for example, you know that even before British came, amara cotton and textiles of Bengal was famous. But seven to destroy kar dele pura. Manchester ko nahi gale seven. Okay, chesta kale na pai successful be held to some extent. ठीक है, other places also. So trade and tariffs. amara jo trade होची इंडिया रू, इंडिया को पैसा आसिया कथा ताकू से माने जते बाधा दे परिवे, टैक्स बेसी पकेले एंड ऑल, और ताको ट्रेड को जेमती जेते सुविधा ही परिवो. ओके, आमठू रॉ मटेरियल नहीं की इंडिया रू फिनिश प्रोडक्ट आनी की सब्सिडीज रे एडी कम दाम रे बिकिले. ओके, मेकिंग ग्रेट प्रॉफिट. और आमर जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट सरिका थिला जोड़ा जेतु से माने बेसिकली कोन से माने हैंडलूम्स. ओके, हाथ रे करथिले तो ऑब्वियसली अधिक टाइम भी लागुथिला और पर यूनिट प्रोडक्शन टाइम भी अधिक थिला, कॉस्ट भी अधिक थिला. बट एमाने जो मशीन रे करि के आउथिले तो से हिसाब रे ताकर कॉस्ट कम थिला. तो स्लोली दे डिस्ट्रॉयड ओके द इंडियन इकोनॉमी. देन रेलवे एंड पोर्ट पॉलिसी. ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन कले पोर्ट फोर्ट बनेले किंतु तांको जिंस आनिया पे जिबा पे. ओके, तो इंडिया रो माने आम लोकंकर बेसी लाभ हैला. ओके, देन मॉनेटरी एंड फिस्कल सिस्टम. एटा बहुत इंपोर्टेंट. ए जो कॉन्सेप्ट हिस्ट्री पढ़ते आपण होम चार्जेस. ओके, ता माने कोन ना से तांकर सैलरी फैलरी जहा सब ब्रिटिश ऑफिसर्स करा यूटू ही मिलतला. ठीक अछि, घर को भी से माने बहुत पैसा पठौतिले. ठीक अछि. सो इट वाज अ ओपन लूट. राइट. तापरे एग्रीरियन एक्सप्लॉयटेशन. सो जो मोस्ट पीपल जो माने आर्टिसंस थिले जेतल तांकर सब बंद हे गला से माने पळे आसले एग्रीकल्चर को. ओके, जोटा दादा भाई नेरोजी कहितले ruralization of Indian economy. Okay, Indian economy was not a rural economy. Okay, earlier, but a British policies, economic policies jogo, it became a rural economy. और से process था दादा भाई नेरोजी कहले ruralization of Indian economy. कुछ पहले तापर response कौन? Economic critique दादा भाई नेरोजी जी की drain of wealth theory. Okay, the paper का लिखी थे and RC दत्ता से माने देखो expose कले. स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट हैला.
Industrial nationalism, a term the one industrial nationalism. Establishment of India's industries like Tata Iron and Steel reflected economic self-reliance. So it will be 250 words. So British economic policies extracted wealth, destroyed indigenous industries, and deepened inequality. Okay. So that is the end of the first part. As I told you, जो मैंने टेस्ट सीरीज रे जॉइन करया पे चाहउछन 55 टा टेस्ट अछि ऑलरेडी हमने 27 टा टेस्ट ओके अपलोड हे गलानी इंक्लूडिंग रिसेंट करंट अफेयर्स तापरे आपनकर मॉडल आंसर्स भी फर्स्ट 15 टेस्ट अपलोड हे गलानी किंतु टेस्ट नंबर 4 चली छि एबे टेस्ट 3 जोटार डिस्कशन चलछि एबे तार जो पर्यंत जो माने पठैतिले आंसर लिखिकी इवैल्यूएट करके ताको दिया हिसाब आपण जेते बेले भी जॉइन करले व्हेनेवर यू जॉइन एमति ना कि एई डेट रे ही जॉइन करार अछि जेबे भी जॉइन करछंती व्हेनेवर यू गिव द ओके आंसर टू बी इवैल्यूएटेड 4 डेज भितरे डिटेल इवैल्यूएशन के आपको मिलिबो ओके सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन नमस्कार।